most of the students are continuously messaging, sir ये हो रहा है, भूल रहे हैं, क्या करें, pressure हो रहा है. Your mental capacity in this last week and also on the day of examination, this is very very important. Let's say if there is examination that is going to ask 15 marks, if not 15, I'm pretty sure that if you leave it, you will not be getting anything. If you have a study partner, you have to start your loud out group discussion, but this should not be beyond 30 to 45 minutes. उठे मुंह हाथ धोया और जीटी देना शुरू कर दिया. No, you have to plan in advance. Spend at least minimum, if you can spend more, at least 3 hours on the daily basis for the MCQ. Alright, hi guys, welcome to PW Meded. I am Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology. For all the FMG aspirant, I know that the pressure might be building up already. This is the last week of your exam preparation. I have something to share with all of you guys, that what should be your steps, what should be your mental capacity in this last week and also on the day of examination. This is very very important, and you have to practice this from now, that what should be your exam day strategy. Now for those students, those who are continuously messaging us, sir, I'm having anxiety, I'm always stressed out, or I am forgetting everything. Now if you are having any of these issues, remember, this is absolutely normal. It is absolutely fine to have the feeling of I am forgetting everything. And I always say, the students, those who study, right, they tend to forget. The only people who do not forget are the kind of people, those who are from the Einstein category, those who are remembering everything, or those who have not read anything. They have no fear to forget. So we as a mediocre, we read, we forget, we revise. So all of you guys are doing good. Just keep pushing whatever you have been doing so far. You have done your best. Just remember that you have to maintain the confidence. And you are not going to give something that is out of the world, or some examination that is going to take you out of this universe. You are just going to attempt a test. Your main goal should not be just this test. You are being afraid about this test because you're thinking that if I do not qualify this test, maybe I do not stand anywhere. That is not true. Your worth is beyond this examination. Just think like this, that if you are trying to make your identity, your real identity should be that I want to be the best physician of my city, or the best surgeon of my city, the best gynecologist of my city. For that, your MD, MS, or let's say MCH wala or DM wala examination should be your identity proving examination. This is just another examination. You will get your after this examination you will get a degree, and I would say you get a certificate to practice in this country. Now you have to think like this, that you are going to attempt just another examination before, because if you continuously think about it, that okay, if I do not pass this examination, what is going to happen, and let's say if I do not pass this examination, maybe I do not stand anywhere. That is not true. जो पास कर लिए हैं वो कहाँ हैं, वो भी यही हैं, आपके आसपास हैं. Many of them are still searching for their internship, and some of them are having a lot of paper issues. Some of them have luckily got it, so kudos to them. But do remember this, that this is just one examination. This is not your identity proving examination. You have many other exams that is lined up, so just take it as another GTs or another just very small exam. Let's say final year examination that you are going to give. This is the last week of your examination. You have to reduce the anxiety, and this is the best defense mechanism that I will be telling to all of you guys. Remember, I'm not saying this examination is not important. No, I didn't say that. What I am saying, that you have to reduce your anxiety factor using this defense mechanism that I'm mentioning to all of you guys. You should not be engaging into any new steps at this point of time, because last के 7-8 दिन रह गए हैं. You just have to revise. Now if I give you one revision plan at this point of time, it would be just too much confusing. All I would say, whatever you are revising, just continue revising. You already have a schedule, I believe. At this point of time, all I can say, that if you are having, let's say, some weaker areas, try to spend at least 1 hour to 90 minutes on those areas, है ना. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, let's say there are some subject that you have not read at all, please do not leave it like this. At least do the MCQs. You can use the MCQs, that is PYQs from FMG solution or whichever sources that you want. Your revision notes should be in the pyramidal mode. When I say pyramidal mode, that means you are going to start your days with the subject, right? You're going to start your days with the subject that should be well known to you, or let's say whatever
subject that you have been doing, just continue doing that one. जो भी आप कर रहे थे आप उनको continue करिए. You start your day like this. As the midday occurs, around the midday, I would strongly recommend start the MCQs, because on the daily basis I would strongly recommend that, let's say you are spending 11 to 12 hours. Now if you want to study 11 to 12 hours, you need to spend 15 hours, because 11 to 2 hours you will not study continuously, there will be breaks in between, right? So 11 to 12 hours ka agar study plan hai, so in this 11 to 12 hours I'll strongly say that at least spend at least minimum, if you can spend more, at least 3 hours on the daily basis for the MCQ. So you continue your subject or your theory followed by your MCQ, and last का जो थोड़ा बहुत एरिया दिन का जो समय बच जाता है उसमें try to spend some time either on, let's say, PYQs or on your weaker areas. Weaker areas को छोड़ के नहीं जाना है. Some people are saying कि pharma is weak, some people are saying anatomy is weak, some are saying, let's say, biochemistry is weak. Whichsoever is weaker area, identify, at least do from rapid revision note, RR note. सबने RR कराया है, and you can find RR everywhere, right? So at least find out the rapid revision का notes and try to at least see to it. Not let's say if there is examination that is going to ask 15 marks, if not 15, I'm pretty sure that if you leave it, you will not be getting anything, let's say 1 to 2 marks. But if you at least do press yourself and at least 1 hour to 90 minutes on the daily basis on those areas, I'm pretty sure that if not 15, let's say around 8 to 10 marks, you will be able to get it. That I can assure you that. At this point of time, I would say that you have to light out some important time. You have to spend some important time in group discussion. So I say loud out group discussion. Make sure that you make mistake in front of your friends. So this should not be beyond 45 minutes. So more than 30 to 45 minutes, this should be the time. So let's say one of your friend is studying anatomy and you are studying anatomy. At that point of time only you are supposed to do the group discussion. Not that your friend is doing surgery and you are going to do anatomy, then you will be asking question from your friend, he will not be knowing anything. Likewise, vice versa from your friend. So if you have a study partner, you have to start your loud out group discussion, but this should not be beyond 30 to 45 minutes. Forget the results का मतलब क्या हुआ? Do not continuously think about the result. Some of the students, those who have, let's say, given examination in the past, they are continuously thinking कि सर दोबारा वैसे होगा तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, examination difficult होगा तो क्या होगा. Do you know what type of paper will be asked? Do I know what type of paper will be asked? No, nobody knows. So if nobody know about this, why to worry about it? So you have to keep that in mind. You cannot do something about it, then don't worry about it. You have been practicing a lot, you have been giving examination a lot, and I'm pretty sure that all of you guys, those who are giving the examination, have already given GTs. And GTs के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि you have to plan a GT. ऐसा नहीं कि उठे मुंह हाथ धोया और GT देना शुरू कर दिया. No, you have to plan in advance. In this last week, I would strongly recommend at least one GT. एक GT आप देने के लिए तो you can give hundreds. 100 तो नहीं दे पाओगे, बट देने के लिए यू कैन गिव, लेट्स से 5 6 7. बट अगेन मैं बोल रहा हूँ तरीके से 1 GT अंडर एग्जाम सिचुएशन, अंडर एग्जाम लाइक सिनारियो, अंडर एग्जाम है ना, अंडर एग्जाम कंडीशन. अंडर एग्जाम कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जामिनेशन के दिन आप तैयार होते हैं, ट्राई टू गेट रेडी लाइक एग्जामिनेशन, ट्राई टू ड्रेस अप लाइक द एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन. इफ यू वांट टू गिव दिट इन लाइब्रेरी, इफ यू वांट टू गिव इट इन योर रूम, you have to close your door and spend, let's say, 50 minute का जो slot है आप उसमें 3 slot दीजिए. take a break of 1 hour, go for lunch, then again give 50 minute का 3 lots. So try to give exam like scenario. I want you guys to leave one day like this, like you will be living in the examination. So exam like scenario में आपको practice करना है. You have to practice कि exam वाले दिन क्या क्या गलत हो सकता है. Think about it. Whatever thing might go wrong will go wrong. And if you already if you're going to practice this, आप कहते हैं ना आजकल सीजन भी चल रहा है ना, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट चलता है ना, सबको पता है कि शादी वाली जो भी चीज़ें होती हैं आप पहले प्रैक्टिस कर लेते हो ताकि यू विल बी एटलीस्ट अवेयर कि व्हाट माइट गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग. सो यू हैव टू कंट्रोल दैट. इसलिए मैं बोलता हूँ यू हैव टू सेलिब्रेट 1 GT डे. मैं बहुत फॉन्डली इसको ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ, गाइस यू हैव टू सेलिब्रेट GT डे. नाउ व्हाट इज दिस GT डे एंड व्हाई डू आई यूज द वर्ड सेलिब्रेट? बिकॉज आपको इसे प्लान करना है. यू हैव टू लीव दैट लाइफ फॉर अ डे.
give the examination, take a break, then give the second part of the examination. After that, you take another break. Take a break. Let's say you want to sleep for an hour, sleep for an hour, then get up, revise that GT. Revise that GT. After revising the GT, if you get some time, you celebrate. Keep it up to you. You want to study, you can study. You want to take a break, you want to watch, let's say 1 hour of news or 1 hour of cricket, it's totally up to you. Spend that time. But GT day ko dena jaruri hai. You have to practice, and after giving the GT, please make sure to revise it. Without revising, there is no point of giving, there is no point of spending that one GT. Take care. Last week may again make sure that you take care of your health as well. You cannot take the risk of falling sick. So all of you guys, those who are living in the area, let's say area of Gautam Nagar, or if you are in Hyderabad, there is one more area in Hyderabad that is also full of all the students, and they are having a lot of food poisoning wala scenario. तो again उससे आप बच के रहिए as much as you can. Try to avoid that. Night before examination, most of the students I see, if there are, let's say, 100 students attempting for the examination, I would say 8 to 10 or maybe more, 10 maybe more, they do the biggest mistake of their preparation, that they do not sleep night before examination. तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग. Please make sure to spend a good night sleep night before examination. You have to make sure that ना ये कब होगा, ऐसा नहीं कि you will be saying on the night before examination कि कल एग्जाम है और मैं सो जाऊंगा. You will be in lot of anxiety. You have to keep saying your brain, you have to train your brain from now itself कि ठीक है, जो भी तैयारी है till the 4th I'll be doing. 5th को अगर कुछ लास्ट का इंपॉर्टेंट टेबल है, डेटा है ना, इफ आई वांट टू से सम लेट्स से स्टेजिंग, अगर उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आई कैन डू. बट 5th को ट्राई टू प्लान योर स्टडीज लाइक लेट्स से 7-8 PM तक यू वाइंड अप, सो दैट अगर थोड़ा बहुत 1-2 घंटा ऊपर नीचे भी हुआ तो 9-10 तक जाते जाते यू ट्राई टू गो ऑफ टू स्लीप. So you have to make sure that you are going off to sleep on the night before examination as soon as possible. The sooner the better. If you are let's say going off to sleep by 8-9 PM, that's better. You want to get up early, it's okay, it's totally up to you. If you want to get up early 4 AM 5 AM, that's absolutely fine, but please make sure to sleep, dine well, and make sure to take a breakfast, because most of the students they go to examination इतने एंजाइटी में रहते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं. तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा. You have to plan it in advance. You have to plan it in advance. आपको एडवांस में इसे प्लान करना पड़ेगा. ये तभी पॉसिबल है जब आप इसे प्लान करके चलेंगे. पहले से करके चलना पड़ेगा कि these are the things that I am going to डू. आप प्लान करते हो ना कि शादी में ये करूँगा, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, वही चीज़ यहाँ पे करना है. दिस इज नथिंग लेस देन ए शादी, बट देयर इज नथिंग लेस देन ए शादी. बट शादी में होता क्या है कि वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है. ये क्या है, ये एग्जामिनेशन, इसके पास और भी सारी शादियाँ होंगी और भी सारे एग्जाम्स होंगे. सॉरी फॉर यूजिंग सम ह्यूमर हियर, बट आई एम श्योर दैट यू गाइस आर इन वेरी मच स्ट्रेस, एंड आई नो दिस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली मैसेजिंग, सर ये हो रहा है, भूल रहे हैं, क्या करें, प्रेशर हो रहा है. ये एब्सोल्युटली फाइन है. ये ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रेशर फील कर रहे हो. यू हैव फेल्ट इन पास्ट एंड यू विल ऑल्सो फील दिस इन द फ्यूचर एज वेल. आने वाले टाइम में यू विल हैव नीट पीजी, यू विल हैव MCH एग्जाम, यू हैव DM एग्जामिनेशन, मल्टीपल जगह पे आपको ये होगा. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू प्लान इट आउट. आपको प्लान करना पड़ेगा. GT को प्लान करिए. गिव 1 GT प्लीज, बट GT को ट्राई टू गिव अराउंड 30th ऑफ जून या 1 जुलाई, 2 जुलाई के बाद नहीं. कोशिश करिए 1-2 जुलाई से पहले ही GT देके खत्म करिए, उसके बाद नहीं. डोंट गिव अगेन, दैट विल क्रिएट अननेसेसरी बर्डन एंड स्ट्रेस टू ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी गेटिंग few questions like a patient is presenting with generalized tonic-clonic seizure, what is the drug of choice? And I think most of you will be saying, चलो सर ने तो पढ़ाया था लेमोट्रिजिन. ओहो, लेमोट्रिजिन तो ऑप्शन में नहीं है, तो सर ने बोला था ऑल्टरनेटिवली हमें चूज कर लेना है वेलप्रोवेट, है ना. और सर ने बताया था चलो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सर ने बोला था कि इथोसक्सीमाइड. सो यू माइट गेट क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल. यू माइट बी गेटिंग क्वेश्चन लाइक दिस. तो ऐसे क्वेश्चन देख करके यू आर नॉट सपोज टू, है ना, गो इनटू फुल इलेटेड मूड, सेलिब्रेशन मोड में नहीं जाना. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू आर गेटिंग इजी क्वेश्चन, मेंटेन न्यूट्रलिटी. If you are getting some difficult question, again at that point of time also maintain neutrality. First 10 question, first 20 question, do not decide anything. You are having 150 in the first part, 150 in the second part. You are having total of 300, and out of 300 you have to bring only 150.
you have to bring 150. That means आपके पास enough question है to get your magical score, and I'm pretty sure that each one of you, when you practice, when you continuously keep on doing the way we are actually suggesting you, each one of you will get through this one. Now do remember that do not go into this one anxious mode if the first 10 to 20 question are going into the difficult mode, because many of the students I have seen in past, very brilliant student, they are sitting in the examination and first 5 to 6 questions are difficult. They don't know anything, they have never seen that, they have never seen those images. They started crying in front of the screen and they said कि सर उसके बाद तो चीजें आती थी लेकिन मैं इतना प्रेशर में आ गया था, I was so much into pressure after that I could not attempt, my hands were in so much sympathetic drive that I could not use the mouse properly. इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसलिए मैं बोलता हूं कि लीव द लाइफ ऑफ जीटी, लीव द लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन इन फॉर्म ऑफ जीटी क्वाइट प्रायर टू द एग्जामिनेशन, सो दैट अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको लग रहा है कि आई एम हैविंग टू मच सिंपैथेटिक ड्राइव, take help. I think there is no harm in taking medicine, there is no harm at all, and we all know that anxiety वगैरह में we can take propranolol, we don't know, you seek help from your teachers, from your doctors, and there is no harm in taking medicine for a night. कोई दिक्कत नहीं है. अगर एंग्जाइटी को कम करना है, सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन एक्चुअली connect with your doctor, with your seniors, with your teachers, with anyone that you want. Please do not jump on to conclusion immediately during the examination. This is again during the examination आपकी strategy क्या होगी. Because many students, they will be reading on a patient presented with the absence seizure and they will jump, okay, absence seizure है तो ethosuximide. No, read about it. A patient presented with the absence seizure, all of the following drug will be used except, तो उसमें इथोसक्सिमाइड नहीं होगा. मे बी द ऑप्शन कुड बी फेनिटोइन, द ऑप्शन वुड बी कार्बामाजेपिन और एनी अदर गाबार्जिक ड्रग लाइक विगाबैट्रिन, थियागाबिन, राइट. सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. आपको क्वेश्चन में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो यूजुअली बहुत ही लेस प्रीफर किए जाते हैं बाय द एग्जामिनर. सो ट्राई टू रीड इफ द क्वेश्चन हैज़ अ नॉट. अगर नॉट या एक्सेप्ट है सो बी वेरी वेरी केयरफुल. ऐसे वर्ड से आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें. You have to maintain the neutrality till the end. I am telling it again, I have been telling it, and I'll be telling you all of you guys again, all over again, that maintain neutrality, right, in any of the condition. If you think you know it, read it again during the examination. Most of the time students will be so much into overconfidence कि उनको लगता है कि यार ठीक है, पूछा कि a patient is presenting with the trauma और बीच में penetrating trauma भूल गए और ट्रॉमा देके पूछा कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम, और आपने पहला ही ऑप्शन देखा कि लेट्स से रोजेट कैटरैक्ट. सो ट्रॉमा, जैसे आपने ट्रॉमा देखा, आपने पेनिट्रेटिंग नहीं देखा. पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कुड एंड अप कॉजिंग सिंपैथेटिक ऑफ्थल्माइटिस रादर देन द ट्रॉमा दैट कुड लीड टू योर रोजेट कैटरैक्ट, right. Blunt trauma can lead to rosette cataract. So what I'm trying to say here, that in any of the subject, be very very careful while reading. Read very carefully. All right. The most common cause of mistake, I always say, in the examination is always going to be silly mistakes. इसको reduce करिए. Now silly mistakes can only be reduced with the practice. It can only be reduced with the proper practice. Continuous practice से आप अपने silly mistakes को काफी हद तक कम कर सकते हैं. And the important part, which I always say, you revise after once you are done within the time, but do not change the answer if you are not sure the second time that you are revising. Most of the students that are making mistake, that they will give the examination, they will have time, then after that they will say okay अब क्या करना है, कुछ तो करें, चलो माउस लेकर के आगे पीछे करते हैं, गेम खेलते हैं. अच्छा इसमें तो ए मैंने मार दिया, ए नहीं मारते, ए अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी सेलेक्ट सी, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं सी. सो अगेन रिमेंबर, you are not sure when you chose that answer first time, and if you are not sure in the second time also, don't change. If there is a confusion while revising second time, don't change. If you think it might be correct, don't change until and unless you are 100% sure that A option or B option that you have selected is just a silly mistake. If you believe that you are 100% sure the second time, then only you change. Other than that, do not change. And again, I am telling you, believe in the first instinct. मैं हर एग्जाम में बोलता हूँ, do not change. और आपने खुद भी देखा होगा कि whenever you change 10 answer, 7 out of 10 will be you'll be making mistake.
जो 7 सही थे आपने उनको गलत कर दिया। तो डू नॉट चेंज, ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, है ना? यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लीव द लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के पहले एग्जाम वाली लाइफ आपको जीनी पड़ेगी, तब जाके होगा, है ना? रिमेंबर दृश्यम मूवी, है ना? दृश्यम मूवी को याद करिए, उसमें बोलता है कि वो लाइफ आपको एक बार जीनी होगी, तब जाके आपको उतने कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है? While revising, you will notice many questions that you know it made silly mistake. हाँ, अगर silly mistake आपने किया है, then you go ahead and change it. अगर आपको लग रहा है ना कि टीबी के फर्स्ट लाइन ड्रग में मैंने, मान लीजिए टीबी में क्वेश्चन आता है ना कि आप कैसे देते हो इंटेंसिव फेज 2 HRZE एंड कंटिन्यूएशन फेज मान लीजिए 4 HRE। तो इसमें कई बार आता है कि बच्चे इंटेंसिव फेज में 4 और कंटिन्यूएशन फेज में 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आई हैव मेड सच सिली मिस्टेक, है ना, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि इंटेंसिव फेज में ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रग होता है और इंटेंसिव फेज कम समय के लिए होता है। कंटिन्यूएशन कंटिन्यूअस देना है तो लंबे समय के लिए देना होगा, एंड वी हैव टू यूज लेस नंबर ऑफ ड्रग्स। तो अगेन जो कहानियाँ हैं वो तो आपको याद रहेंगी, आपके अपने अपने सब्जेक्ट टीचर में डेफिनेटली दे हैव टॉट यू लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ निमोनिक्स, सो यू हैव टू रिवाइज दैट एंड मेक श्योर टू यूटिलाइज दीज स्टोरीज। वहाँ पे एग्जाम में जाके कई बार माइंड गेम मत खेलने लगना। माइंड गेम मतलब क्या होता है, कई बार जब आप सोचते हो ना तो रेजिस्टेंस आना शुरू होता है, दैट ये था एंड यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर डू नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय स्पेंड मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये होगा, रेजिस्टेंस आ रहा है, आप जो पहला थॉट आया मार्क के आगे बढ़िए, या उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। मेक श्योर दैट यू मार्क फॉर रिव्यू और बाद में आकर के उसको आप रिव्यू कर लें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विद प्रैक्टिस ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड डू योर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इन 60 सेकेंड। तो क्या होता है, कई क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, कई क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, तो यू विल बी एबल टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, स्टॉप। सर ने बोला है इफ आई एम गेटिंग रेजिस्टेंट, स्टॉप थिंकिंग, है ना? रेजिस्टेंस आ रहा है तो बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सो यू विल हैव टू कंटिन्यू with this preparation that you are doing, I am telling you, then make sure that दोपहर के टाइम में मैंने MCQ इसलिए बोला बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे नींद आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यू आर फॉलिंग स्लीपी, then you can even do passive learning. What is passive learning? You can open YouTube or many other platform जहाँ पे आपको MCQ का डिस्कशन हो रहा है 1.5 पे, आप उसको सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो think positive and I'm pretty sure that each one of you are going to get through this one. Lots of love and prayers to all of you guys, and we'll be more than happy to answer any of your queries in this last week of the examination. Keep studying, keep revising. God bless you all.